Hello, Namaste, and welcome back to this new learning nugget. I'm creating this video after a good time, after a good gap. The reason is special. As you must have seen, there is a huge gap in Nifty. नमस्ते दोस्तों, आज के इस लर्निंग नगेट में स्वागत है। आज वीडियो बनाने का एक अलग ही रीज़न है। आपने देखा होगा, देखिए चार्ट पे निफ्टी 1000 पॉइंट के गैप डाउन, जब ये प्री ओपन हो रहा था, इट वाज ओपनिंग विद अ गैप डाउन ऑफ अराउंड 1300 प्लस पॉइंट्स, बट थैंकफुली वी हैव रिकवर्ड in half of the points. So 1500 या 1300 पॉइंट नीचे था प्री ओपन में, and it has closed minus 742 points. As you can see here, it has closed minus 742 points. Sensex 2226 points पर down, बैंक निफ्टी 1600 points down, और मिड कैप जो है 1836 points down. इस वजह से I thought I'll create a video. Now let's have a look at it. What has happened? डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो लेट्स गो बैक टू वीकली टाइम फ्रेम टू मिनिमाइज द स्क्रीन। ये गैप में मिनिमाइज कर रहा हूँ। लेट्स हैव लुक एट दिस। ये इलेक्शन रिजल्ट जो थे उसका ये गैप डाउन है, एंड इट इज़ अराउंड, कर्सर जो हॉरिजॉन्टल है ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अराउंड 21,281. सो ये काफ़ी टाइम से, जब से ये गिर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस दैट इट दे माइट गो एंड टच दिस गैप वंस. ये जो लो है, दे विल टच दिस लो वंस, एंड देन it will be interesting to see whether they want to further go down or then recover. So मोटा मोटा ये मैं मान रहा था कि February मार्च में बॉटम has been formed, but उन्होंने ये जो मार्च का बॉटम है, they have very comfortably broken this and created a new gap, new bottom today, and we are at 10 months low. तो ये नया बॉटम बन गया है अपना, और ये आज जो है 1500 पॉइंट्स से प्री मार्केट के 742 पॉइंट्स we have recovered. So that's an interesting story, interesting indication and a good sign. But अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है. सो ब्रिजिंग दिस गैप, इनफैक्ट दिस गैप इज हायर देन एनी अदर गैप क्रिएटेड इन लास्ट, आफ्टर दिस, आफ्टर अगस्त. अगस्त की ये जो गैप है, इससे भी बड़ी ये गैप है. लुक एट दिस. ये जो गैप है, सिक्स, दिस गैप वाज अराउंड यस 24,686 का लो प्रीवियस डे, एंड नेक्स्ट डे 24,400. सो 200 पॉइंट्स का ये जो गैप लग रहा था. नाउ लुक एट दिस, देयर इज अगेन अ गैप, दिस इज अगेन अ गैप, और उसी गैप को फिल करते हुए नीचे जो है निफ्टी आ गया है. एंड लुक एट दिस, व्हाट इज द गैप नाउ. इसका जो लो है, लो ऑफ 1 अप्रैल इज ऑफ 22,857, और आज का जो हाई है वो है 22,254, 22,857 और 254. तो ये है ऑलमोस्ट 700-600 पॉइंट्स का गैप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी नीड टू फिल दिस गैप इफ वी वांट टू गो एंड क्रॉस दिस हाई. तो ये तो निफ्टी के बारे में हो गया. लेट्स हैव अ लुक एट नाउ अदर स्टॉक्स, सम स्टॉक्स. और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ पैनिक रिएक्शन बिकॉज ट्रम्प अनाउंस्ड टैरिफ्स एंड एवरी कंट्री इज फॉलिंग. और काफ़ी जो है यूएस से लेके, यूएस एस डाउ जोन्स हैज फॉलन 2000 पॉइंट्स, यूरोप हैज फॉलन बाय 1500 पॉइंट्स, एशियन इकोनॉमी जैसे हैंगसेंग मार्केट है, इट हैज़ फॉलन बाय 3000 पॉइंट्स. तो आई फील इंडियन जो निफ्टी है अपना, इट हैज़ रिकवर्ड अ लॉट कंपेयर टू दैट फॉल. तो हमारा जो मार्केट है निफ्टी, इट हैज़ फॉलन लेस कंपेयर टू other indices. Now this is the time when we have some good stocks showing reversal. और अगर ये कंटिन्यूइंग नहीं हुआ ब्रूटल फॉल, एंड विच साइंस आर लुकिंग गुड. यहाँ पे देखिए, दिस विथ टॉल वॉल्यूम गैप डाउन तो था ही, बट वी हैव फिल्ड एन एंटायर फॉल. तो अब सिर्फ गैप ही बची है फिलअप करने के लिए. नाउ लेट्स लुक एट सम स्टॉक्स. सो आई फील दिस इज अ पैनिक रिएक्शन by some traders, और जो big FIDIs हैं, they have started accumulating good quantities, and this panic will go away. अगर ये temporary है मेरे हिसाब से, तो this panic will go away in next few days, and next few days will be very very crucial to get some good quality stocks. जरा देखते हैं, चलो नज़र डालते हैं स्टॉक्स पे. लेट्स हैव अ लुक एट इट. ये NACL पहला ही स्टॉक है. देखिए, ये मार्केट हैज़ फॉलन विथ ह्यूज गैप ऑफ 700 पॉइंट्स, एंड दिस स्टॉक, मैं डेली पे हूँ, इट हैज़ गिवन यू एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग. ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज या तो एंगल्फिंग दिया है या फिर ट्विज़र टाइप्स के कैंडल दिए हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. विथ गुड वॉल्यूम 3.6 मिलियन, और जो हाई लो डिफरेंस है 128 वर्सेस 141, मोर देन 5% अप. Felix, look at the candle, man. Gap down था, and then from gap down 154 to 183, they are again up by more than 5% यहाँ पे, and they have crossed. This is also a bullish engulfing, and look at the volume. And this Valiant Lab, यहाँ पे देखते हैं, they have also given almost bullish engulfing.
So there are many stocks which are showing recovery reversal after this panic fall, and this is the time when we might have some good entries in stocks and good green days. So if you choose these stocks wisely, and as per your experience, these are the days, I would say these are the good days to earn some good profit. ये देखिएगा, this was a panic stock, ये देखिए नीचे जा रहा है with circuit, but it has started showing some signs of recovery. Almost 200K buying, 2 lakh quantity buy हो चुकी है, given a bullish engulfing again. So these are some stocks which might have some good action in next few days. This is also a bullish engulfing. Look at this. With a fall, negative day, bright negative day, huge negative day, these stocks are showing good signs of early recovery. So 145, 169 and bullish engulfing. Delivery, look at this. Huge quantity bought. Wow, amazing. 24 million quantities, guys. Don't be surprised if we see delivery soaring up in next few days. This is my gut feeling. Do not go on my, this is not a buy recommendation at all. Look at this. This is chart is for educational, and I'm not giving you buy tips. This is how we study the market. Look at this huge tower. Everyone was waiting. जो स्मार्ट मनी है, they were waiting for this low and they have captured good quantities. देखिए इसका भी ज़्यादा जो लो है इम्पैक्ट नहीं आया है. What was this low? Low of 13 March. ये था 236 and today's low was 238. So we did not cross this low delivery में, and it is still under this buying range. And 24.89 million quantities bought. It's available at 271, and now I think the worst is over in this stock. We might have some good recovery. उसके बाद देखते हैं एजिस लॉजिस्टिक. इट वाज फॉलिंग सिंस लॉन्ग, ये साइडवेज जा रहा था. It has given you good rally. Aegis Logistic was a dear stock back in this bullish run. March 24 May last year, it was rallying nice. Up, look at this. July 24 say it has gone sideways and tried to inch up in January 25 this year and went down. Now some smart money traders or some smart money institutional buyers have started buying it, and look at the quantity, 8 million bought versus here 14 million almost bought. And today gap down and good green candle, kind of an engulfing इसका है, शायद ये क्रॉस करते करते रह गया. Then GMR airport infra, again sign of good recovery, guys. No lower low, this is a nice reversal. GMR infra is also looking good. GRA movers, what a candle, look at this. काफ़ी सारे stocks हैं. Focus, huge gap up. Normally I don't prefer such stocks which are giving us upper circuit level stocks because the exit is very crucial and you might not get good exit. तो यहाँ पे देखिएगा अदानी विल्मर, what a recovery and no lower low despite of such a bad day. Now let's look at it. JWL, Jupiter Wagons, again a good recovery. 372 पे आ गया है. High low difference was 311, 375, almost 64 rupees का आज का ट्रेडिंग सेशन है. एंड दिस इज इंडिया शेल्टर, high low difference 650, 827. This is the difference. This is the kind of trades we get, and I will monitor these stocks in next few days for a better trading. Britannia, look at this. Britannia was forming this kind of inside bars and a kind of tightness here, and we saw 4605 to 5072, almost 500, 450 rupees performance here. A good nice point up. Godrej Properties had a result, I guess, and candle is doji. Hindustan Unilever, FMCG. Now FMCG is all set to go. Look at this. Hindustan Unilever has been falling. जब ये गिर रहा था, it has it. This stock had its own momentum. It was falling, and when market has fallen and recovered, this stock has recovered with 3.44 million quantities here, 3.75 million quantities. It's looking interesting. And then Orient Cement. Orient Cement is about to do something interesting, guys. Look at this, I guess. Yes. This is a tightness. This is a range that it is stuck to. And once it crosses this high, you might see some interesting momentum here. So this is looking very interesting. And for me, these are some picks and other stocks which I will monitor in next few days. Thank you so much. If you want to learn live sessions, join us in live for learning the live market. Like and subscribe if you want to continuous learning episodes. तो आपका समय देने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ.